good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to all of you to the Blub World Web Talks 101st episode. In the last 100 episodes, more than 1,500 school leaders have participated on this very platform, shared their ideas, opinions, perceptions, innovations, and what all new is going on in the K-12 space, or to put it simply, what's happening in schools. इन पिछले 100 एपिसोड्स में हमने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें करके ये जानने की कोशिश करी कि अब जब ये पैंडेमिक आ गया, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर ली जिससे हम काफी समय तक लड़ते रहे एज एजुकेशनिस्ट, बट अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और पूरा इकोसिस्टम एवोल्यूट करने लग गया, चेंज होने लग गया. सो व्हाट चेंज डज दिस सिनेरियो ब्रिंग इन योर फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर, कि आने वाले समय में एजुकेशन कैसी दिखेगी, किस तरीके के इनोवेशंस होंगे और वो इनोवेशंस कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कौन कौन से नए प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे. बिकॉज व्हेन थिंग्स इंप्रूव दे एट द सेम टाइम दे डिप्रूव, क्योंकि नई नई चीजें आएंगी, बहुत सारे हमारे इस्तेमाल करने के तरीके बदलेंगे, चीजें हमें इस्तेमाल करेंगी. हम पहले लर्निंग करेंगे टेक्नोलॉजी के एंड फाइनली मशीन लर्निंग से टेक्नोलॉजी आपको पड़ जाएगी एंड फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिशें की जाएंगी. एंड व्हेन ऑल दिस हैपेंस in the space of education, that's where the real challenge comes up. आज की तारीख में बच्चों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. आज भी इंडिया में कोई भी बच्चों का ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता. हम जितने भी प्लेटफॉर्म्स आज यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम यूएस लॉ एक है, चाइल्ड ऑनलाइन यूजर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपा, केवल उसी को फॉलो करता है. देश में अभी तक कोई लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर नहीं है जो बच्चों को ऑनलाइन सिक्योरिटी दे या उन्हें प्रोटेक्ट करे. एंड एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के बिना अब एजुकेशन नहीं है. सो हाउ डू यू थिंक ऑल दीज फैक्टर्स विल कम टुगेदर? एंड शायद आपसे हम थोड़ी बहुत भविष्यवाणी सुनना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र की, और ये भी समझना चाहेंगे दैट व्हाट इज योर इनोवेटिव थॉट दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड विद इन योर इकोसिस्टम, और आपने उसमें क्या देखा. क्योंकि पिछले इतनी सारी टॉक्स में से हमने करीबन 200 से 250 ऐसे आइडियाज निकाल के सोशल मीडिया पे, हमारी मैगजीन के थ्रू करीबन 5500 स्कूल्स तक पहुंचाए हैं दुनिया भर में. उनकी स्केलेबिलिटी लोगों ने टेस्ट करी, फिजिबिलिटी टेस्ट करी, और उसमें से कुछ आइडियाज अभी इंप्लीमेंट हो रहे हैं और चल रहे हैं. जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एक स्कूल है वेस्ट बंगाल में, पड़ुआ में, जहां इंटरनेट ही नहीं था पढ़ाने के लिए. सो दे गेव एन असाइनमेंट वेयर दे टोल्ड देम टू क्रिएट अ कस्टम डिक्शनरी एट होम, कि रोजाना इस डिक्शनरी में 5 नए वर्ड्स डालिए, जब स्कूल खुलेगा तो ये डिक्शनरी स्कूल ले आइएगा. एक स्कूल है सुंदरबंज उड़ीसा में, जिसने एक असाइनमेंट दिया जिसका नाम था विजडम डायरी, कि रोजाना एक लिस्ट बनाइए कि दिन में अच्छा क्या किया और खराब क्या किया, ताकि आपका वैल्यू एजुकेशन इसमें जज हो जाएगा. There's one school in Assam, the Springdale Academy. They started something called a balance sheet of time. बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट पढ़ते हैं अकाउंट्स में, उस बैलेंस शीट में करेंसी को टाइम से रिप्लेस कर दीजिए. अब अपने असेट्स, टाइम इन हैंड, कैश इन हैंड, लिक्विडिटी, सारी की सारी चीजों को समझिए. So people have been amazingly innovative during the complete lockdown, और अभी भी एजुकेशन बहुत पॉजिटिव चीजों के लिए चेंज हुई है. एंड हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और चीजें पॉजिटिव होंगी, लेकिन एक नई तरीके का डिवाइड अब हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. जो अभी तक केवल इकोनॉमिक था वो अब डिजिटल भी हो गया. ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीबन 60% देश भर के बच्चे पढ़ाई से पूरी तरीके से कट गए, क्योंकि उनके पास में किसी भी तरीके का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. उसमें ना सरकारी एलिमेंट था, ना प्राइवेट एलिमेंट था, बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं थी और उन जगहों पे इंटरनेट नहीं था. तो ऐसे सिनेरियो में हमारे देश में शिक्षा कहाँ जाएगी, कैसे एवोल्यूट करेगी, इस पे आप सबके थॉट सुनते हैं एंड आपके इनोवेशंस के बारे में जानते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉल, जैसा भारतीय संगीत में होता है कि हर राग की एक रेगुलेशन होती है, रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, उसका एक आरोह अवरोह होता है. तो हमारे आरोह अवरोह सिंपल से हैं. आप लोग 2 भाषाओं में से कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी. इट्स अ बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म, बट इससे तीसरी लैंग्वेज कोशिश करें कि ना इस्तेमाल करें, क्योंकि समझ नहीं आएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स अ टाइम्ड प्लेटफॉर्म. तो जैसे ही आपका बोलने का समय खत्म होता है, यू माइट गेट म्यूटेड. इफ यू गेट म्यूटेड, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. It is just to finish this activity on time so that none of your schedules get disturbed. So now it's time to listen to you. What do you think will happen and is going to happen in the field of education as far as innovation is concerned? And to begin with, let's first have a perspective of higher education, क्योंकि ये थोड़ा सा bird's eye view देंगे कि बाहर से इन्हें क्या लगता है कि स्कूली शिक्षा कैसे बदलने वाली है.
So a very warm welcome to the first guest for today, Professor Raghuveer Singh, Vice Chancellor, Tirthankar Mahavir University from Moradabad, Uttar Pradesh. Raghuveer ji, over to you for the next 4 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you so much, Dax. It's wonderful for me to come to your platform and share whatever little I've experienced during the last 6-7 months. Yes, when we were stuck with this so-called pandemic, we were for almost about 3 weeks, we found ourselves in no man's land. We had no idea what to do. We weren't prepared for it, in fact. We did have information technology at our level, but teaching, learning through technology was never imagined, to be very frank. But then as an educationist, you cannot remain silent to it. So the two most important challenges which we faced is, the first one is the platform, and second one is access to the material. So we had our first meeting with all my principals, about 18 colleges which we have, and all of them agreed readily that within the next 10 days or so we would prepare the e-material and upload on the website. And within a week's time, we'll start rolling our plan for online education. Okay. And thankfully, from there onwards, we never had any difficulty. We had all our exams, even today, our test, that is, we use that continuous assessment test on the platform. No doubt, this technology has helped us keep rolling, has taken a lot of worries off our head as far as delivery is concerned. But there are limitations to the poor technology also. As you mentioned, there are challenges also. One of the challenges we said, the connectivity. Since we are located somewhere in the rural area, Moradabad, there are a good number of rural students who join us. They did have this problem. But then subsequently they upgraded their devices and things. It all happened, and then we said, okay, hey, we would personally help you in terms of sharing our content with you, and then special classes through our faculty wherever it is possible. The problem which I'm trying to point out here is, you see, if this pandemic continues, nobody knows how long it will continue. There is one element of learning which we would always miss. See, when you look at anybody around, whether it's a school or a college, there are, specific purpose beyond content learning, which is not possible online. I come to the college or a school for developing my confidence, for developing my ability to deal with people, to develop my network, to engage into numerous other activities which increases my confidence and courage. I don't get that. Then doing doesn't happen on online platform as of now. Whatever little simulations you have, especially for medical education and dental education and others also, see, that has its own limitations. Simulation is not close to reality. When I try to treat my patient physically and when I do it simulated, there's a whole lot of a difference. Yes, I do get that experience, awareness, things get demonstrated, but that's not the reality. So technology will never be able to develop reality. You might call it on a virtual. Thank you so much, Raghuveer ji. The time was over, but we'll try to come back to you क्योंकि आप काफी बढ़िया बातें कर रहे थे और आपने पूरे प्लेटफॉर्म को बड़ा एक अच्छा सा kick start दे दिया, and you gave it the very right direction which we wanted. And to summarize what you said, कि हमने 3 weeks का no man's land experience किया, पूरे दुनिया ने किया, and rather इंडिया ने तो बहुत जबरदस्त तरीके से किया क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से बंद थे. क्राइसिस था प्लेटफॉर्म का और मटेरियल का. दोनों चैलेंजेस थे कि आप पढ़ाएंगे क्या और कहां पे पढ़ाएंगे. इसके अंदर एक सॉल्यूशन जो पूरे देश भर में सबसे ऊपर आया, वो सॉल्यूशन का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो सबसे बड़ा
व्हाट्सएप में वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बट वो हुआ और बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजी तो बना ली थी सर्व करने के लिए, बट उसमें बहुत सारे लैग्स थे, प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि टेस्टिंग हुई नहीं थी, बिकॉज लोग टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते थे। आपने अपने 18 कॉलेजेस के अंदर एक साथ 10 दिनों के अंदर अपना पूरा करिकुलम लॉन्च कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत कमेंडेबल है। कंटिन्यूस असेसमेंट आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इसमें वैनिश हो गए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन मोटा मोटा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गया सीमलेसली, और उसमें परेशानियां कम हो गई ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करने की। स्पेशल क्लासेस आपने चलाई, रूरल एरिया में आप थे तो बहुत ज्यादा आपने रिसोर्स चैलेंज बच्चों की तरफ से देखा, जो कि सच में एक चैलेंज था। और एक बात जिस पे आपने पूरी चीज को कंक्लूड किया कि हम पूरी ऑनलाइन लर्निंग में एक मेजर एलिमेंट को हमेशा मिस करेंगे, एंड दैट इज लर्निंग बियॉन्ड कंटेंट। क्योंकि यहां पर हम जितनी लर्निंग कर पाएंगे उसका फोकस हमेशा कंटेंट होगा, और उसकी पटरियां वो कंटेंट ही होंगी। बट उसके बियॉन्ड बहुत सारी ऐसी लर्निंग है जिसको हम जैसे कोलेटरल डैमेज कहते हैं, जैसे कोलेटरल लर्निंग है जो हो रही होती है, वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो उसके हमें और नए तरीके और टेक्नोलॉजी ड्रिवन तरीके निकालने होंगे, अगर यही सिनेरियो कुछ समय और कंटिन्यू रह गया तो। सो थैंक यू रघुवीर जी फॉर इनिशिएटिंग द सेशन इन द मोस्ट परफेक्ट एंड एप्ट मैनर, कि आपने दोनों तरफ की पिक्चर दिखा दी कि कहां हम ऑनलाइन से अवेयरनेस तो बिल्ड कर लेंगे सब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर के बारे में, लेकिन उसके आसपास का एक्सपीरियंस बिल्ड करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अब इस चैलेंज के ऊपर द बेस्ट पर्सन हु कैन एक्चुअली गिव हिज ओपिनियन इज समबडी हु रन्स एन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जो ये रोजाना ये चैलेंज देखते हैं कि अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं और उनको टेक्नोलॉजी कैसे आने वाले समय में पार करेगी, एंड व्हाट विल बी द इनोवेशंस दैट विल हैपन in the edtech space. Let me invite the next speaker for today, Mr. Abhishek Raj, who is the founder and CEO of EduLux from Bengaluru, Karnataka. Abhishek ji, over to you for the next 4 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thanks, Daksh, for doing this. Good evening, everyone. And I must congratulate you for having such a long series. I don't know how you have been managing this. So as soon as COVID hit, we were into some other business, and we were into teaching science through experiential learning. So again, like everyone else, we were also searching for like, how do we take this online now? And we really searched for it. What was available on internet was Zoom, Google Meet, and other things like that. And those kind of platforms, frankly, are not built for education. And that is the main problem that everyone faces. Right? If you go through the experience of teachers, they say that the classes are very low in decorum. There is no interactivity, only one-way communication, internet connectivity is low, and 100 other problems. So the situation is like we don't have enough tools for teachers so that they can take this education online effectively. And that is what we are working on. So we are working with like 3,000 taught educators already by enabling them through technology so that they can effectively do this online. We are nowhere close to it, but we are working very closely with them so that in coming months, we have something that replicates or that simulates what happens in the physical world. And that, in fact, is a very big challenge because there are hundreds of elements to what happens in physical space. So coming to like what happens after the COVID settles, or even if it settles or not settles, and if technology takes over or not, what are the basic fundamentals of education that we can focus on, and what we can really think of? So number one thing that I want to touch upon is like inculcating the habit of asking why in education. So this is irrespective of content being taught anywhere. So why is asking the question why important? I'll take the example of Israel, one of the most intellectually developed countries in the world. When children come to their home, their mother asks that what was the most interesting why question you asked your teacher in the entire day? And imagine how it changed the entire world there. So children are more aware of the situations. They are in general more curious. And by asking the questions, they're making the teacher smarter. And overall, the next crop of generation that is coming up is way smarter just by asking the question why. And that is something that we were catering just before COVID, and it did not work off. The second thing is the ability to research. We see lots of, we already know there is a lot of information and content available online. So how do we get into the deepest of the things, curate that entire learnings that we have done and put it in a readable format or in a conclusive way? And that habit, I believe, is going to be, again, one of the major things that
will be required in the generations to come. Third thing is internet maturity. So there is no way that we are moving into the digital world and people have no idea what information is fake, how to use certain websites and 100 other things, how to conduct themselves online. And learning about internet, learning about this new system of world is going to be very, very important. And I'm afraid to say that there are not much courses or not much emphasis given or given onto this. And the last thing like I would like to touch upon is, especially for the leaders, the principals and the professors who are out there. So the world is changing very, very fast and all the information is available online already. Now, what is the purpose that will drive students to the schools and colleges 5 years from now? Why will they come to schools and colleges? And how do we move into that direction so that we can actually cater to those things? And that is the question I want to leave and even learn from you guys, that why will this happen? And with that, I conclude my talk. Thanks, Daksh, for doing this. Amazing, amazing things. I've been going through this, lots of videos, and it has been a learning to learn from everyone else. I've gone through like 20 odd videos. I refer to them every now and then. Thank you so much, Abhishek ji. एंड आपने बड़ा एक अच्छा नया पर्सपेक्टिव पूरी टॉक में ऐड किया कि जब आप एक ऑफलाइन बिजनेस में थे और इसके लॉकडाउन के आने के साथ ही आप एक ऑनलाइन बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे, तो आपने एक नए तरीके की एवोल्यूशन जर्नी खुद भी जी ली. एंड इस एवोल्यूशन में आई थिंक आपने बहुत अलग तरीके की इनोवेशन को रियलाइज किया होगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि इनोवेशन की तो होगी ही, बट आई थिंक एक इनोवेशन रियलाइजेशन भी हुआ होगा कि क्या क्या और चाहिए इस स्पेस के अंदर. सो टू समराइज व्हाट यू सेड कि कोई एक सीमलेस सोल्यूशन था नहीं ऑनलाइन टीचिंग का. वो बहुत बड़ा चैलेंज था जो सब जने फेस कर रहे थे कि भाई वीडियो बना दें कि टेक्स्ट बना दें, अगर बना भी दें तो कौन से प्लेटफॉर्म पे दे दें. तो कंटेंट प्लेटफॉर्म की एक बहुत कंटिन्यूअस लड़ाई चल रही थी. फिजिकल प्लस डिजिटल स्पेस, एक फिजिटल स्पेस बनाने की कोशिश सब जने कर रहे थे, बट प्रॉब्लम वही थी कि अगर हम कुछ बहुत एवोल्यूटेड बना देते थे तो इंफ्रा तोड़ देता था हमें. अगर हम कुछ बहुत बेसिक बनाते थे तो हम उससे पर्पस ही सॉल्व नहीं कर पाते थे. तो बहुत एक अजीब तरीके का पैराडॉक्स था जिसमें पूरी दुनिया एकदम से आ गई. हैबिट ऑफ आस्किंग व्हाई, जिस पर आपने काफी समय अपनी टॉक का बिताया कि इजराइल ने एक ये हैबिट बनाई लोगों की, रोजाना बच्चे पूछें कि क्यों, ये दिन क्यों है या किस लिए है. जो जर्नलिज्म के भी 5 W's and 1 H है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई ही होता है कि ये चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि दैट इज वेयर यू फाइंड अ कनेक्शन एंड दैट्स वेयर पीपल वांट टू रीड, पीपल वांट टू लर्न, पीपल वांट टू लिसन. क्योंकि जब आप व्हाई का जवाब देंगे वहीं पे किसी की नीड का सॉल्यूशन होगा. एंड which plays a very critical role in enhancing curiosity. Ability to research, जिस पे आपने अगली बात करी, जो हम लोगों के यहाँ पे एक बहुत आसान चीज देखेंगे पूरे देश भर में कि हमारी रिसर्च लाइब्रेरीज के लिए होती है, दुनिया के लिए नहीं होती. तो लाइब्रेरी से सोसाइटी में रिसर्च आ जाए एज एन इनोवेशन, वो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें पार करना होगा एज अ नेशन. और हमें नई चीजों पे थोड़ा विश्वास करना बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज जब भी कोई इनोवेशन आता है हम आसानी से ट्रस्ट नहीं करते. ये पूरे एडटेक स्पेस के लिए बहुत ड्रास्टिकली हुआ कि आप एडटेक इंप्लीमेंटेशन जो अगले शायद 10 सालों में देखते हैं वो आपने 45 दिन में देख लिया कि तुरंत सारी चीजें इंप्लीमेंट हो गई, लोग इस्तेमाल करने लग गए. लेकिन आई थिंक अगर पहले थोड़ा विश्वास किया होता तो शायद इस समय में हम काफी हद तक ज्यादा एवोल्यूटेड, ज्यादा समझदार होते. क्योंकि इसी चीज पर आपने अपनी बात को कंक्लूड किया, इंटरनेट मैच्योरिटी, जो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आने वाले समय में, जिसपे हमने एक्चुअली इस टॉक को शुरू भी किया कि हमारे यहाँ पे कोई भी बच्चों को ऑनलाइन थ्रेट करने वाला लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता. सो हमें अब एक इंटरनेट पे मैच्योर होना और इसको समझना बहुत जरूरी है. एंड जहां आपने फेक न्यूज पे टॉक किया कि फेक न्यूज और फेक कंटेंट, तो फेक न्यूज जो वर्ड है वो अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है. ऑक्सीमोरॉन इसलिए है क्योंकि अगर वो फेक है तो वो न्यूज नहीं है, अगर वो न्यूज है तो वो फेक नहीं है. ये दोनों शब्द एक साथ कभी नहीं आ सकते, लेकिन हम इनको जी भर के इस्तेमाल करते हैं. तो हमें ये समझना होगा कि चीजों को हमें कंटेंट लेवल पर जज करना आना चाहिए. इसका कोई कोर्स कहीं नहीं है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है, इसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और अब इसकी जितनी जरूरत किसी और चीज की नहीं है. तो यहाँ पे वो नीड बन गई है जिसकी अब सॉल्यूशन चाहिए. एंड एक सवाल जिस पे आपने एंड किया और जिसको मैं चाहूंगा सारे स्पीकर्स के सामने वापस से रखना ताकि इस टॉक को थोड़ा और पर्पस मिल जाए, कि फाइनली आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब हम इतना टेक्नोलॉजी इन्वेजन देख चुके होंगे, क्या कारण होगा कि कोई बच्चा स्कूल आएगा या कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा. फिजिकल स्पेसेस इन एजुकेशन कहाँ जाने वाली हैं? So thank you so much Abhishek ji for adding this question to the whole talk. Let me now invite the real practitioners जो हर दिन वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वर्चुअल
क्लासेस को चला रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं. So let me invite Mrs. Ragini Srivastava, Vice Principal BHEL Jawaharlal Nehru School from Bhopal, Madhya Pradesh. Ragini ma'am, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you, Daksh, and thank you, Blub World, for giving me this opportunity to speak on the very burning topic called education innovation. Today's situation is really a strange situation, an astonishing and surprising one. And it reminds me of a science fiction, The Pedestrian by Ray Bradbury, in which a man was imprisoned because he was taking a walk outside, and it was considered something to a psychiatric problem. So we are also nowadays facing this virtual world in the last 3 months or so, when there was a total lockdown due to COVID. And what our children were playing virtual games, suddenly they realized that the education has also become virtual. I would like to touch upon three things here, three areas, that is the student, the teacher, and the parent. For the teachers, it was a sudden dramatic change in their life when they were told to go online teaching. It was not easy, but everything got speeded up. Something which we used to dream of, that in after 2020 or 25 things would become like this, it suddenly happened. And teachers too were not very happy or very reluctant to go online. It was not easy for them. Similarly, the students, for whom mobile laptops and computers, parents used to keep them away from, suddenly they were given it in their hands. Come on, now you have to start your learning on this. For parents also, it was a very, very difficult and taxing time, because they were scared of giving their children an internet, which was taboo for them. And they were frustrated also. They blamed the schools for trying to take out money and try online classes, which they felt were useless. But slowly, as time went by, they realized that it was the need of the hour, and they started scheduling their time to help the children to go online classes. Now, this really makes us realize that the new normal is going to be different. The new normal would be a virtual class, where we were thinking of having physical presence of student always, where attendance is important. Now we have to look on this matter. Now we need to think about our schools, where the student need not be present physically all the time. We will have to provide the choice to the parent and the student, either to attend the school physically or attend a virtual class. We will have to. Thank you so much, Ragini ma'am. The time was over. To summarize what you said, आपने अपनी बात करी, बड़े अच्छे लहजे में आपने बात को शुरू किया कि imprisoned for walking, और सच बात है, यही हमने एक्सपीरियंस किया कि अगर हम शायद टहलने भी निकल जाते तो अभी किसी जेल के अंदर बैठे होते, because that was typically lockdown and that's the way it was defined. कि हमने जिंदगी की एक ऐसी रियलिटी देखी जो कि किसी की इमेजिनेशन में नहीं था दूर दूर तक कि ये चीज कभी होगी भी, और ये शायद वर्ड हमारी वोकैबुलरी में ही नहीं था, ये वर्ड ही वोकैबुलरी में ऐड किया इस समय ने, इस पेंडेमिक ने. एंड वर्चुअल गेमिंग, वर्चुअल स्टडीइंग में तब्दील हो गई, एकदम से पूरी दुनिया वर्चुअल हो गई. टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, ये जो ट्राई पार्टी एनवायरनमेंट था, ये ट्राई पार्टी एनवायरनमेंट जो कि टेक्नोलॉजी का पूरा पुरजोर विरोध करता था, उसने एकदम से टेक्नोलॉजी को गले लगा लिया. और एक स्कूल के प्रिंसिपल थे इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ समय पहले, जिन्होंने एक अच्छा सा एनेक्डोट बोला था, और वो लाइन में काफी बार इस्तेमाल करता हूं, तो मैं आज भी कर रहा हूं, कि शायद टेक्नोलॉजी एजुकेशन का वो बच्चा है जो बड़ा हो गया और उसने पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली. टेक्नोलॉजी बनी ही एजुकेशन की वजह से थी, क्योंकि इतने लोग पढ़ गए थे, एंड आज की तारीख में पढ़ाने की जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी ने उठा ली है कि वो बच्चा बड़ा हो गया है. और ये चेंज इतना ड्रामेटिक था कि हम लोग रेजिस्टेंस से एप्रिसिएशन पे बहुत कम समय में चले गए. जो पेरेंट्स विरोध कर रहे थे वो क्लासों को अप्रिशिएट करने लग गए. लेकिन ये एवोल्यूशन इतना आगे बढ़ गया कि जिन क्लासेस में करीबन 70 से 80% की अटेंडेंस रहती थी, वो क्लासेस आज की तारीख में करीबन 20 से 25% की अटेंडेंस पे वापस आ गई हैं, बिकॉज एंगेजमेंट नहीं बन पा रहा. टीचिंग कंटिन्यूड है, लर्निंग इज वेयर द चैलेंज हैज कम, क्योंकि पढ़ बच्चा नहीं पा रहा. जस्ट सम डेज बैक वी हैड अ बिहेवियरल साइंटिस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म who told us a research outcome. जब एक बच्चा ऐसे स्क्रीन को देखकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, उस समय पर उसका अटेंशन स्पैन केवल 8 सेकंड्स का होता है. हर 9th सेकंड पे he has started daydreaming. तो उतना engaging कंटेंट क्या हम बच्चों के लिए बना पाएंगे is where
द नेक्स्ट चैलेंज कम्स इन, और जहां पे आपने अपनी टॉक को कंक्लूड किया कि अटेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज टू बी रीविजिटेड नाउ, क्योंकि अब बच्चा फिजिकली नहीं हुआ और आपने अगर 70% 75% अटेंडेंस के चक्कर में उसको एग्जाम ना देने दिया, तो ये एक नई तरीके का चैलेंज है। अब आप वर्चुअल अटेंडेंस लेंगे, लेकिन आप ये श्योर नहीं हो सकते कि बच्चा आपकी क्लास को देख रहा है या यूट्यूब पे किसी वीडियो को, क्योंकि ये बहुत नए तरीके के चैलेंजेस हैं जो इस स्पेस में आ गए हैं। तो देखते हैं कि और क्या लोगों के पास इसमें बोलने को है। Let's see what other practitioners have to say and add to this perspective. Let me invite Mr. Ravish Prajapati, who's the Vice Principal, Mount Litera Z School from Posad, Maharashtra. Ravish ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you once again, Daksh. I always feel immense pleasure when I am on Blub World, and all thanks to you, Daksh. You have created a good platform for all of us to present our views on this platform. Not taking much of the time, I would like to start innovation and education. See, the time of this pandemic was such that we were not at all expecting this. First of all, no one was expecting, and suddenly this changes has come, and we all have adapted it very beautifully. But now also there is a need of innovation in this education world. As you know, you have just told me that many of the students are there who are attending the class, but we don't know whether they are attending the class or they are watching YouTube videos or they are playing games, because we are receiving a lot of complaint from the parents that sir, बच्चा क्लास तो कर रहा है, 10 मिनट क्लास ऑन करता है, देन उसके बाद वीडियो ऑफ कर देता है, एंड नाउ ही इज प्लेइंग द गेम. I have a lot of photographs which is sent by the parents to me on my personal WhatsApp. So now we are taking good steps to monitor them, but now also there is a need of 4E, what I personally believe. The need of 4E. What are the 4E's? They are explore the internet, explore the possibilities, explore the content to make it much more interactive for the students to engage them for 40 minutes of the class. Experiment is needed, as you know. Without experiment we can't do anything. There is a lot of experiment from the first day of this pandemic. There is a lot of experiment taking place so that students are made to engage in the class. The third thing is most important thing, that is evaluate. We are exploring, we are experimenting, but we are not evaluating whether actually students are getting the knowledge what we want to give them or not. That is the major thing. The third is, that is why I have said third is very important. We have to evaluate, are we on the right track to give the right information and right technique to give the information to the students. And the last E is evolve. After taking all these 3 steps of E, the last step is evolve. We have to evolve a new methodology to make it sure that students, parents, and even the teachers who are the basic for the teaching have something in their pocket whenever they come to the students to tell them, yes, this is what you want and I am here to give you the same thing what you need. This is the 4 E's which is very necessary. I think so. A good teacher in this innovation world of education needs to be more evolutive, and he or she has to take steps to evolve new things to make students learn and make parents understand that yes, technology is the need which has fulfilled our criteria of information in this pandemic situation. With this, I would rest. Over to you, Daksh. Thank you. I think so I have concluded my part. Thank you so much, Ravi ji. You added a new perspective to the discussion, and आपने अपने 4 E's की theory बड़े अच्छे से बताई. And इससे पहले कि मैं आपको summarize करूं, there's one new information that I'd like to put in front of everybody. Blub ने पिछले जो 100 talks किए हैं, उसमें उन 100 talks में हमने एक भी repeated speaker नहीं है. हर talk के अंदर it is always exclusive speakers जो कि पहली बार ही web talk attend कर रहे होते हैं. 100th talk के बाद से हमने एक ट्रेडिशन अब नया चालू किया है कि हम हर talk के अंदर एक हमारे पहले प्री अटेंडी को वापस से बुलाएंगे
तो उसके पहले प्री अटेंडी रवीश जी हैं. रवीश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स द सेकंड टाइम, क्योंकि पिछले 100 एपिसोड्स में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि कोई गेस्ट रिपीट हुआ है. ये हमने आज चालू किया है, जो कि thank you, Dash. It was 50th episode which I attended, and this is the 101 which I have attended. I'm very thankful to you, Dash, that you have given me this opportunity to bring my ideas in front of so many knowledgeable person. I would expect that बहुत ज़्यादा जल्दी I would get the opportunities to come on this Blub World. And I think so. This is a very good platform for me. थैंक यू सो मच. आप बहुत सारे स्कूल लीडर्स, बहुत सारे लोगों, आप जैसे लोगों की वजह से ही ब्लब वर्ल्ड अभी वो बना है जो वो है. बहुत अमेजिंग आइडियाज हमें स्कूल लीडर्स ने, टीचर्स ने, बच्चों ने दिए, जो कि आइडियाज अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड इंप्लीमेंट हुए. जिसमें से एक आइडिया था वेयर वी टोल्ड टीचर, देयर इज अ स्कूल इन सिंगापुर दैट स्टार्टेड एन एक्टिविटी कॉल्ड टीचर्स टी पार्टी, जिसमें रोजाना सुबह 7 बजे अपने सारे टीचर्स को इकट्ठा करते हैं ऐसे एक वर्चुअल कॉल पे, और 10 मिनट की वो एक चाय के साथ में बात होती है जिसके अंदर वो एक सॉल्यूशन देते हैं ऐसे प्रॉब्लम का जो उन्होंने कल फेस की थी. और ये टीचर्स टी पार्टी अभी आपको जान के खुशी होगी करीबन इंडिया के 100 से ज्यादा स्कूलों में रोजाना हो रही है, जिसमें लोग बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी बातें समझते जा रहे हैं इसके आसपास. सो थैंक यू सो मच रवीश जी. आपने जिन बातों की बात करी, I just want to mark one more thing. The point which you have said, tea party, was the same part we have discussed in the episode in which I have first attended the Blub World. Amazing. There was a principal from Singapore जिन्होंने आइडिया दिया था, जिसको हमने फिर पब्लिसाइज करना शुरू किया. एंड जिन बातों पे आपने करी कि एक तो पेरेंटिंग डिजिटल हो गई, आपके पास फोटोग्राफ्स आने लग गए कि कौन बच्चा यूट्यूब पे है और कौन आपकी क्लास में है. ये नई तरीके की पुलिसिंग या पेरेंटिंग चालू हो गई है. एंड आपने 4 E's की बात करी, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, इवैल्यूएट एंड इवॉल्व. ये जो प्रोसेस पूरी डिजाइन थिंकिंग का है, ये जो प्रोसेस इंजीनियरिंग डिजाइन का है, ये प्रोसेस अब स्कूल में आ गया और स्कूल लीडर्स के बीच में इसकी बातचीत होने लग गई. ये अपने आप में बहुत बड़ा एवोल्यूशन है कि हम लोग पेडागोजी को इतना ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं कि जो बातें टीचर्स की वोकैबुलरी में नहीं थी वो अब सच में आ गई और वो अब ऑन ग्राउंड इस्तेमाल होने लग गई. सो एज एजुकेशनिस्ट्स, एज एन इकोसिस्टम, वी हैव एवोल्यूटेड ड्रामेटिकली, और वो बहुत शानदार है कि वो सब लोगों के साथ रह जाए. एंड बच्चे की नीड को फाइनली वापस से एजुकेशन के सेंटर में ला पाने की फिर से एक प्रयास होना शुरू हुआ, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होनी शुरू हुई, बिकॉज अब बच्चे को और किसी तरीके से एंगेज करना शायद पॉसिबल नहीं. So thank you so much, Ravish ji. Let me invite the next speaker for today, Mr. Akash Raut, who's the principal of First Steps IB World School from Chandigarh. Akash ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you so much, Daksh. It was nice to listen to all of you on screen, and of course, coming towards the end of the discussion, a lot of points have already been covered. I would like to start with a quote that is, change is pleasant, but change is constant as well. And only when we change and grow, we will see a world we never knew. And I guess this time, the pandemic is actually teaching a lot of things to us, which was never taught in our school. Am I right? So I have jotted down a few points considering what others have mentioned, contributing to the talk, and have added my own as well. So firstly, I would like to bring in a point of distinction. Earlier, we used to always say child is at the center, school, stakeholders, teachers and parents, they are at the corners. But I would say the paradigm has to be shifted. We need to bring child also in one of the corners, because the moment we give an agency to the learner will himself or herself know, why am I learning? And this clearly links with what Mr. Rajput mentioned in the beginning, and I follow that in my classroom or in my school as well. Teach the students why before you teach them what and how. Because that reasoning, the justification is important, then what are they learning? Linking to what Mr. Singh mentioned, teach them the skills and the context and not just the content. Gone are those days when we would just rote learn facts and knowledge, but where was the application? That was always missing. Another thing I would say is, after this pandemic, I guess a clear line has been understood by parents, stakeholders, and teachers. In terms of, so I differentiate in 2 parts. From parents' end, I guess now they need to understand what is the subtle difference between involvement and interference. I guess parents will learn that and stop interfering in the learning and teaching process and start involving more. On the other hand, the teachers and the school will also understand the difference between engagement and entertainment. Having high-tech facilities and calling yourself as one of the best institutions, I personally see most of them
as a part of entertainment. But where is the engagement from the learner's end? We have always heard that a learner who wishes to learn can learn from anyone and anywhere. I guess that is bringing its real sense into context. Furthermore, isn't learning lifelong? Isn't learning dynamic? Isn't learning supposed to be transferable? Why are we focusing so much on is it completed as per the syllabus or as per the curriculum? Why don't we keep that curriculum so flexible, keeping in mind what our learners are going to need in the next 10 years? If as an educator, I can answer this question, yes, I guess my students or my learners in the next 10 years would reach this level, I'm preparing them for that succession. And if I don't have an answer for this, then I guess I'm just teaching them facts and knowledge from books, which very clearly pandemic has shown kids can go online, find it on their own and do their learning. Lastly, I would like to sum it up with the 21st century skills, the 4 skills that we have. Akash ji, the time was over, but thank you so much. हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 minute और दे दें before this talk comes to an end. So आपने जो बातें कही, to summarize them, that change is pleasant and constant. Pleasant तो शायद थोड़ा सा disputable है, लेकिन हाँ constant है जिसकी guarantee है, because बहुत सारा change बहुत सारे लोगों के लिए pleasant नहीं होता, लेकिन मजबूरी होती है. And but ये है कि जो उसको pleasant sense में ले लेगा, वो उसके साथ आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा. He'll get stuck in life. Child at the center to child finally going to a corner. ये बात आपने सच कही कि हम लोग कंटेंट के अंदर बच्चे को एपिसेंटर में रख सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में हमें सारे स्टेक होल्डर्स को एक लेवल पे लेना होगा, क्योंकि अब जब आप पूरी कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं, एक बहुत आसान सी चीज जो रोजाना वर्चुअल क्लास में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक स्कूल की साइज क्वाड्रपल हो गई है. जो 30 बच्चों का क्लासरूम हुआ करता था, उसमें अब बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, शायद दादा दादी भी हैं, शायद कजन्स भी हैं, तो आप अब एक कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं, आप केवल अपनी क्लास को नहीं पढ़ा रहे हैं. तो इस पॉइंट पे आपको एजुकेशन को बहुत एस्पेक्ट में रिविजिट करना होगा, क्योंकि सवाल बहुत अलग तरीके के होंगे. एंड एज अ मॉडल द स्कूल हैज बिकम ट्रांसपेरेंट. अब आप पारदर्शी हो गए, सबको सब दिख रहा है कि क्या पढ़ रहा है कौन, क्या पढ़ा रहा है कौन. सो दिस इज वेयर द न्यू चैलेंज इज एक्चुअली कम अप. इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस का डिफरेंस पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ गए, इसीलिए पीटीएम्स ऑनलाइन बहुत सक्सेसफुली हो रही है दुनिया भर में, जिसमें कोई परेशानी कहीं नहीं है, पेरेंट भी समझ गए. एंड एंगेजमेंट एंड एंटरटेनमेंट का डिफरेंस ये बहुत आवश्यक है समझना अब एजुकेटर्स को, क्योंकि हम एंगेज करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एंटरटेनर्स बन जाएं. क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जब आपको स्क्रीन पे देखता है तो वो आपको किसी ना किसी सेलिब्रिटी को कंपेयर करता है, क्योंकि उसने स्क्रीन पे सेलेब्स ही देखे, और जब उसको आपकी कंटेंट डिलीवरी पसंद नहीं आती तो वो यूट्यूब देख लेता है. तो वहां नया चैलेंज है कि हमें एंटरटेनर नहीं बनना है, लेकिन हाँ एंगेजमेंट बिल्ड जरूर करना है. एंड बाय सिलेबस कंप्लीशन, की जैसे हम ह्यूमन से अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी आई थिंक हमें अब सिलेबस से भी एक्सपेक्ट करनी होगी, क्योंकि पढ़ाई बहुत हद तक बदल रही है और उसे बहुत ज्यादा अडेप्टेबल दुनिया के साथ अब होना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच आकाश जी. लेट मी नाउ इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, मिसेस वर्षा चौहान, हु इज द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश. वर्षा जी, ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Yeah, thank you, Daksh. Hi, good evening, everyone. Very excited to share my views. Actually, this is a B class city, and here to bring the education at home to home, it was really a big challenge in this pandemic. But thanks to the nets and the new technologies, we thought to buy one app, and that was the Lead app. And it worked very, very nicely for all of us. But how to go with this pandemic, it was very difficult in those times when it started. Because to bring all the children under one platform, even the parents, how we'll get the parents involved into the education, how we'll give the children all the things and the task. How the big question was in front of me, it was the big how. But seeing everyone and seeing the scenario and searching on the net, we thought we should go with the Google. Now we went with the Google Meet, but we were not able to check how many students are actually attending it. Now we have to focus more with the parents, because parents were literally not ready to be on Zoom. मेरे बच्चे की आँख खराब हो जाएगी. Then it was restriction from the court also, from the government also, for the little kids you cannot go. And to bring school to home, it was a big challenge. But yes, definitely we did it.
And heads off to my teachers, whatever the guidelines and whatever the things we used to give them, means the imagination part. Can you imagine to bring whole school under one platform? And then slowly the parents started convincing. We convinced them that it is required, it is necessary, because it's not going to be a 0 year. So you have to make your children learn. In 1 month, we did not get any attendance or anything. Like Mr. Daksh said के बच्चे गोल मार देते थे, YouTube देख लेते थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ. इतने बच्चे टेक्नोलॉजी से यूज टू नहीं थे. ऑब्वियसली बड़े बच्चे थे, बट स्मॉल चिल्ड्रन वेर नॉट देयर. सो अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वेर देयर, बट वी ब्रॉट एवरीथिंग हियर थ्रू लीड ऐप. तो लीड ऐप के थ्रू हमने जो टेक्नोलॉजी और जो हमारे टीचर्स ने इम्प्लीमेंट किया, हाउ टू टीच मेजरमेंट और टू टीच द साइंस और एनीथिंग, they prepared their own videos, they brought their imagination to the children, and they intimated the children, and the involvement of the parents were 100% in us, in our school, I should say. So this was the big achievement. We used to tell the parents कि हमने बच्चे को टास्क दिया है, प्लीज हेल्प के बच्चा कर रहा है कि नहीं. पहले तो पेरेंट्स स्कूल पर छोड़ देता है, 100% सब स्कूल केयर करते हैं और बच्चों के साथ रहते हैं. पेरेंट्स आर लीस्ट बॉदर, चलो हमने स्कूल भेज दिया, वी आर फ्री. But here the parents' involvement was 100%, and we were very happy कि चलो. Thank you so much, Varsha ma'am. Summarize what you said कि आप एक tier 2 शहर में थे, and उस शहर के अंदर नॉर्मली देश भर के अंदर सारे tier 2 सिटीज में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पेरेंट्स की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड पे रिसोर्स का भी चैलेंज था, इंफ्रा का भी चैलेंज था. पेरेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा त्रस्त था क्योंकि इनकम्स tier 2 शहरों में बहुत ज्यादा हद तक हिट हो गई थी. और इसका केवल एक ही तरीके का डिफरेंस हमने देखा, एक स्टार्क डिफरेंस की, जो आपके आर्मी रन स्कूल्स थे AWES के या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय थे, उनमें ये चैलेंज नहीं आया क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे वहां पढ़ रहे थे. तो ना उनकी सैलरीज रुकी थी ना कुछ और, तो वो चल पाए. लेकिन tier 2 शहरों में ये सच में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था स्कूल को ऑपरेट करना, क्योंकि रेजिस्टेंस सच में बहुत ज्यादा था. और आई थिंक कि टीचर्स को सेल्समैन बनना पड़ गया पेरेंट की कन्विंसिंग के लिए कि भाई पढ़ा लीजिए, ये 0 ईयर नहीं है. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको आपने बहुत अच्छे से फाइट किया, एंड आपने उसके लिए लीड को पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद में यू वेंट ऑन टू गूगल मीट्स एंड फाइनली कमिंग बैक टू लीड. एंड हाँ, ये जो हम लोग मैनूवरिंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमें अब समझना चाहिए कि मैक्सिमम लोग जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने का डिसीजन ले रहे हैं, मतलब स्कूल लीडर्स या स्कूल मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट टेक savvy. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हैं, वो प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. और प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन एग्जीक्यूशन के समय पे हो रहा है. तो हम लोग बहुत सारा बच्चों का कंटेंट, बच्चों का डेटा और बच्चों को एट रिस्क ले आए हैं ऑलरेडी. तो हमें इस पॉइंट पे शायद ये वापस से एक बार रीइमेजिन करना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों की सेफ्टी बढ़ाएंगे इन द कमिंग टाइम्स. जैसे जूम के साथ हुआ, गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आई कि साहब जूम जैसी ऐप इस्तेमाल आप ना करें क्योंकि इसका चाइनीज ओरिजिन है. उसके बाद में बहुत सारे लाइन से नोटिफिकेशन आते गए, आप ये इस्तेमाल मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप वैसा मत कीजिए. एंड द चैलेंज वाज कि हम लोग वो नोटिफिकेशन केवल पढ़ पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे. सो दिस इज द रियल चैलेंज कि आज जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और हमारे भारत में एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपनी पॉलिसी बनाएगी, और आपके यहाँ तक जो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो क्या कागज लाएगा वो पता ही नहीं है. तो हमें हमारे यहाँ पे बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज द एग्जीक्यूशन एलिफेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन डज नॉट मूव सो इजीली. तो हमें और तरीके निकालने होंगे कि हम कितना अच्छे पेस पर इस चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकें. पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, रेजिस्टेंस अब कम हो गई है, एंड बहुत लोगों ने अपना अपना टेक्नोलॉजी हेवन भी ढूंढ लिया है. सो थैंक यू सो मच ऑल द स्पीकर्स. सबका एक बार बोलना हो गया है. सो लेट मी नाउ इनवाइट वंस अगेन द चेयर ऑफ द राउंड टेबल, जिन्होंने इस राउंड टेबल को चालू किया था, बिकॉज उनकी बात पूरी हो नहीं पाई थी. सो लेट मी वंस अगेन इनवाइट प्रोफेसर रघुवीर सिंह. रघुवीर जी, ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट 3 minutes, ताकि आप अपने कंक्लूडिंग थॉट्स दे सकें, एंड देन वी कैन मूव फॉर द ओपन फ्लोर फॉर अ मिनट or two. Thank you so much. Thanks. See, as far as higher education is concerned, we have our own kinds of challenges, unlike school education. The first biggest challenge is we don't know what kind of education these kids have had in schools. Your biggest challenge is because you have one child coming from a very good school, another is coming from a poor school. You can't deny that
So a child coming from a poor school is overawed by the entire environment. A child coming from a very good school is at times get bored because of the way higher education is delivered. So the biggest problem with higher education, I understand, is the way we in fact develop our curriculum. Unlike schools where everything is defined, the higher education universities have freedom to develop a curriculum. So, but curriculum development exercise is more, but putting pieces together, picking it from here and there. It is never, in fact, designed on the basis of certain theories and certain design theories or curriculum design theories or learning theories. See, and the word curriculum itself is so misunderstood. 99% of us, in fact, consider curriculum is all about putting courses together. The curriculum should be built around two important things: outcomes and experiences. So the entire process, academic process, right from involving stakeholders, developing, your outcomes, then putting the entire pieces together, the kind of courses and all those. And there are certain, design theories involved in it. Then your course outcomes, the way you teach, we call it andragogy, and then your assessment strategy, then review and corrections. This entire process is actually missing from higher education. There are universities in the country which take great pride in saying that, hey, we were able to complete, or rather we were able to conduct our exams and declare results in time. Where is the quality of education? So you'll find good number of children coming from good schools really find themselves, misplaced or at a place which is much different. So today, if I look at education, it's more about marks and degrees. It's got nothing to do with learning. No learning actually is happening. None of us, in fact, talk about learning. We all talk about completing courses, conducting examinations and things like that. This whole lot of things have to change if the curriculum the education has to be of some meaning. The content is so much emphasized. There is always a talk about called updated. What is the meaning of updated content? In today's world, technology is moving so fast. The content is also moving so fast. That's not our role to keep the students. Let's make them to learn. Develop those typical skills. That is like ability to apply, analyze, evaluate, create. If you develop that, the rest child will take care of his learning. Nothing to worry, but unfortunately, the huge focus on content delivery, examination, and certification. And there is no meaning. I mean, like if somebody asks, what is the meaning of this certificate? 80% marks ka meaning kya hai? Nobody will be able to define it. None of us can certify that 80% marks means this kid knows so much or this kid can do this. It's completely missed. So it really requires a great course correction, though new education policy is trying to do it. But as you mentioned already, implementation is the key, nothing else. Or taking it to the last mile is the key. Announcing principles and policies is fair enough, you can put together. But what happens in the ground reality is what it is already there. Thank you. थैंक यू सो मच रघुवीर जी. आपने कहा सच बात है कि एक ऑट से इज की जर्नी बहुत बड़ी है. हम ऑट तो बना देते हैं पॉलिसीज के साथ, लेकिन उसका इज में तब्दील होने में शायद जनरेशंस खत्म हो जाती हैं और एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है. जैसे हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लास्ट माइल एजुकेशन की भी बात करनी चाहिए कि, और एजुकेशन में भी लर्निंग की, क्योंकि हम कंटेंट से सर्टिफिकेशन तक की जिंदगी जी रहे हैं. पूरा देश एक बीमारी से ग्रसित है जो कि है सर्टिफिकेशन. हमें कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेशन चाहिए. प्राइसिंग सर्टिफिकेशन की है, सारे लेजिस्लेशन सर्टिफिकेशन पे हैं. लर्निंग या उसकी क्वालिटी पे कोई बेंचमार्किंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फॉर्मुलेशन नहीं है. बिकॉज क्वालिटी इज वेयर वी आर मिसिंग इट कंप्लीटली. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका एलिमेंट है, कुरिकुलम डेवलपमेंट. कुरिकुलम डेवलपमेंट की इंडिपेंडेंस नहीं देना शायद गलत है, और अगर देना तो उसको रिसर्च बेस्ड करना. एंड फाइनली वापस से वही बात
या आपकी रिसर्च आपकी थीसिस और लाइब्रेरी से बाहर आके सच में दुनिया में इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके लिए एक अलग तरीके की कोशिश चाहिए. सो पीपल, द नेक्स्ट 2 to 3 minutes आर एन ओपन फ्लोर. अगर आप बीच में म्यूट कर दिए गए थे, आप अपनी बात नहीं कंप्लीट कर पाए, तो आप अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. बस थोड़ा सा एक दूसरे का ध्यान रखिएगा ताकि हम सबकी बात सुन सकें. सो एनीबडी वांट्स टू स्पीक नेक्स्ट? या आकाश जी, प्लीज स्टार्ट. Thank you, Daksh. I wanted to complete one point, and thanks, Professor Singh, because my point clearly interlinks with what Sir just mentioned. So what Sir mentioned about was curriculum, and I link it with the purpose, because as an educator, I need to know what is the purpose of my presence in the class, be it a virtual classroom or be it a physical classroom. So I personally look at it on 3 levels. One is collaboratively plan. And when you collaboratively plan, as you clearly mentioned, it has to be research driven. Look at evidences, look at what are other schools and curriculums doing around the world, try to imbibe them and plan it according to your local systems. Secondly, learn and teach together. When I mention learn and teach, I place learn in the first position, because as an educator, I need to continuously learn. I cannot just say I have done my master's in education, I have done my doctor's in education, and I'm qualified enough to teach. No one's qualified enough to teach. It is a lifelong process. I need to keep on going. And third, it's about assessments. So Sir very nicely mentioned about exams and results being at the core. And as a student of Indian system myself, the only thing that I was always fed up of was the final summation exam. But no one is ever bothered to understand, have I learned efficiently? So assessment need to be done at 3 levels of the curriculum. Secondly, what is learned, how is it learned, and thirdly, how is it taught? So assessments at 3 levels, and assessment should be reflective, constructive. It should include feedback and also feed forward. What am I going to take ahead along with this? And if I guess we encompass all of this into a model, which very much, if you are aware of the International Baccalaureate program, the IB curriculum, they do it. I guess that would change the learning scenario in our country, and that is the need of an hour. So I'll conclude my talk on this note. Thank you. Thank you so much, आकाश जी. बहुत तरीके की कुरिकुलम लिबर्टी हमें अब चाहिए भी, और उस तरीके के प्लेयर्स अब हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल भी है, जिसके अंदर कैम्ब्रिज भी है, जिसमें आईबी भी है, कि बहुत नई तरीके की इंडिपेंडेंस आ रही है. बट एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है इसके अंदर, जो बार बार आके सारी प्रॉब्लम जहां पे अटक जाती है, द लास्ट माइल कनेक्टिविटी और एजुकेशन को इंडिया में अफोर्डेबल बनाना. क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इंडिया का जो असल पॉपुलेशन है वो गांव में, टियर 2 टियर 3 शहरों में है, एंड उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम वहां मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे थे, हमने कर नहीं दिया था. एंड उस समय पे आपने एक चीज और ध्यान देनी चाहिए कि अक्रॉस इंडिया जो रूरल एजुकेशन है, उसका एपिसेंटर इज नॉट एजुकेशन, उसका एपिसेंटर इज अ मिड डे मील. तो वहां एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहां पे हम पर्पस भी लूज कर जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लूज कर जाते हैं, और हम लोग इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे, शायद हम लोग ब्राइब कर रहे. हमें नए तरीके ढूंढने होंगे कि आदमी मील खराब नहीं है, मील हटना भी नहीं चाहिए, मील होना चाहिए, क्योंकि उसने काफी चीजें इनेबल करी, लेकिन वी नीड टू थिंक मोर कि हमें किस तरीके की चीजें पढ़ानी है. सो एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक नेक्स्ट, यू कैन पुट योर हैंड अप. Raghuveer ji, please. The last point before I leave. See, let me confess, I don't know much about school education. We as professors know very little about education. We might have a strong domain knowledge, but not much about education. Right? That is why rightly the new education policy has brought in that every student doing PhD has to essentially teach and learn about education, whether it's pedagogy, assessment, or curriculum design. Second important thing, this is least researched topic in our country. As a professor, it's only in the late 3-4 years I've been, researching in education, especially in outcome-based education. Prior to that, I didn't know much about education. And so that's true story, because now for last 3-4 years, I've been conducting a lot of workshops on education delivery, curriculum design, outcome-based education, blah, blah, blah. And then I realized that I can vouch, leave aside 5 to 10% faculty members, education is not understood.
If education is not understood, then the effectiveness you can think of what happens to it. That's the point I wanted to make. Absolutely. हम लोग efficiency और effectiveness में बहुत बड़ा गैप खड़ा कर चुके हैं और जिसको पाटने का एक ही तरीका है रिसर्च, और जो मैक्सिमम देश भर में एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और एक्सेप्टेबल अगर है भी तो बड़ा मतलब फौरी तौर पे है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफोर्डेबल नहीं है. तो हमें रिसर्च को थोड़ा और अफोर्डेबल और एजुकेशन को वापस से नॉट फॉर प्रॉफिट सच में बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये सच में एक गिविंग बैक टू सोसाइटी वाला काम है. एंड सिंस द टाइम इज अप एंड इट्स टाइम टू कंक्लूड दिस टॉक, एज ऑलवेज बिफोर दिस टॉक कम्स टू एन एंड, जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन एंड सम फूड फॉर थॉट. अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे तो ह्यूमंस के इतिहास में ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब द कम्युनिटी अराउंड यू इज रेडी टू लिसन. और ऐसा केवल तब होता है जब वी एज अ कम्युनिटी फेस एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि जब हम सच में मरने वाले होते हैं, पतन की कगार पे खड़े होते हैं, हम तब सुनना शुरू करते हैं. तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे एजुकेशन में, तो उसका सबसे सही समय अभी, क्योंकि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लोग सुनेंगे और उसको करके भी देखेंगे. तो जो भी करना चाहते थे कर लीजिए, और एक कोशिश रोज कीजिए कि एक ऑब्जर्वेशन पेपर जरूर लिखिए रोजाना, भले ही 100-150 वर्ड्स लिखिए, लेकिन लिखिए, बिकॉज यही वो नया नॉलेज सेट है जो कि दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करेगी आने वाले समय में, बिकॉज दैट्स द टिपिकल फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन इन द कमिंग टाइम्स. एंड बिफोर दिस कम्स टू एन एंड, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लब, व्हिच कम्स फ्रॉम अ सिंपल लाइन, टीन्स इंस्पायरिंग टीन्स. हम लोग हर महीने ऐसे बच्चे ढूंढते हैं दुनिया भर में जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं और उनकी स्टोरीज दूसरे बच्चों तक पहुंचाते हैं. तो ऐसी एक स्टोरी आपके लिए जो कि 4 स्टेटमेंट्स में खत्म हो जाएगी. एक बच्ची है जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहती है, पेंटिंग का शौक था, जिंदगी का पहला पेंटिंग एग्जिबिट लगाया 2 साल की उम्र में, जो कि पूरी तरह से सोल्ड आउट हुआ. दूसरा एग्जिबिट लगाया 4 साल की उम्र में, जो हुआ न्यूयॉर्क में, वो भी सोल्ड आउट. तीसरा शो के लिए उसे इनवाइट किया यूरोप की सबसे प्रेस्टिजियस गैलरी ने, और उस गैलरी में भी उसका शो पूरी तरीके से सोल्ड आउट. वो लड़की अभी मिलियंस में कमाती है, होम स्कूल्ड है, कभी स्कूल नहीं गई है, और अपना पैशन फॉलो करती है, और अभी केवल 13 साल की है. एंड दैट्स द कवर पेज ऑफ ब्लब वर्ल्ड जस्ट सम मंथ्स बैक, एंड दैट्स एलिटा आंद्रे. तो बस ऐसे ही बच्चे हम लोग हर महीने ढूंढते हैं, बिकॉज एक चीज जो हम समझ गए हैं कि टीचिंग को अब जब आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना है तो वो टीचिंग को इंस्पिरेशन बनना होगा. So thank you so much, people. I hope you enjoyed the last 60 minutes that you spent with us. If you did, you can open your audio, say a big yes, and thank you so much for being a part of the Blub World Web Talks 101st episode. Thank you. Thank you, dear. Thank you so much, Thank Daksh. It was really nice of you to Thank have you. us It on was this really platform. inspiring. Thank you. Thank you, Daksh. Thank you, people. Thank you. Very nice. Thanks, Daksh and team. Amazing. Thank you.